From a fiery start to Parliament's winter session to FIR against Samajwadi Party MP over Sambal violence and what Supreme Court said on Delhi's air pollution. Here are the major stories of today in this news wrap. Hi, I'm Flora Swai and you're watching the Indian Express. Let's get started. A day after multiple people were killed and at least 20 police personnel were injured following clashes over a survey at the Shahi Jama Masjid in western UP's Sambal, a first information report, that is the FIR, was registered on Monday against Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Burke and the son of an MLA from the party in connection with the case. The death toll in the clashes went up to 4 on Sunday after a 19-year-old boy passed away due to gunshot wounds, according to the police. On Sunday, 3 people had died during the clashes. Let's check out our detailed report on this. A day after multiple people were killed and at least 20 police personnel injured following clashes over a survey at the Shahi Jama Masjid in western UP's Sambal, a first information report was registered on Monday against Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Burke and the son of an MLA from the party in connection with the case. Reacting on the same, SP President Akhilesh Yadav said that SP MP Ziaur Rahman was not even in Sambal and questioned the FIR. ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। हमारे विधायक वहां थे और सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान। कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। Following this, in the press conference today, SP Krishna Kumar Bishnoi clarified why Rahman was named in the FIR. किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 BNS का उनको BNSS का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलुकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। Prime Minister Narendra Modi on Monday delivered a sharp critique of the opposition, accusing certain leaders of attempting to disrupt parliament for political advantage. He emphasized that the public has repeatedly reaffirmed its support for the BJP and its allies in the Lok Sabha while rejecting some parties yet again. PM Modi's comments come amid heightened opposition efforts to pressurize the central government on several issues, including the unrest in Manipur and the allegations of irregularities against the Adani Group raised by the US Department of Justice. Catch PM Modi's remarks in his customary address. संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद।
हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। The Supreme Court on Tuesday said emergency measures under the Stage 4 of the Graded Response Action Plan, that is a GRAP, to deal with air pollution will continue in Delhi for the time being. A bench of Justices A.S. Oka and A.G. Masih also left it to the Commission for Air Quality Management, that is a CAQM, to take a decision on reopening of schools from classes 4th and upwards and other educational institutions. The bench that reviewed a chart of AQI figures for Delhi said, and I quote, it shows that AQI from 20th of November to 24th of November ranges between 318 to 419. Unless the court is satisfied that there is a consistent downward trend of the AQI, we cannot permit the commission to go down to stage 3 or stage 2. Fixing the matter for hearing next on the 28th of November, the court directed the commission to place the updated data on that date so that the court can take a call on GRAP 4 measures. Asking the commission to consider if the ban on physical classes as part of the emergency measures should continue, the bench said this was necessary because some of the students are being deprived of facility of midday meal as schools and Anganwadis are closed. Large number of students do not have facility of attending online education, and the residences of large number of students do not have air purifiers. And therefore, there may not be any difference between the children sitting at home and the children attending the schools. BJP's Devendra Fadnavis is set to reclaim the Chief Minister's seat with Eknath Shinde and Ajit Pawar as Deputy Chief Ministers of Maharashtra. Sources confirm major cabinet reshuffling with the BJP holding 21 portfolios, Shiv Sena securing 12 and the NCP taking 10. Key portfolios like home and finance are still under intense negotiation. Here's our detailed report on this news. Big developments in Maharashtra politics as BJP leader Devendra Fadnavis is all set to take charge as Chief Minister once again. Sources confirm that Eknath Shinde, who currently leads a faction of the Shiv Sena, and the Ajit Pawar from the NCP will be appointed as Deputy Chief Ministers. A BJP insider revealed, and I quote, Fadnavis's name has been approved for CM by the BJP leadership. Mahayuti allies are reportedly aligning with the proposal, with the Shiv Sena and the NCP expected to secure significant representation in the cabinet. While Shinde's faction may secure 12 ministerial berths, including key portfolios, and the NCP close to 10 berths, the BJP has plans to retain 21. Crucial portfolios like home and finance are being negotiated but could be shared among the alliance partners. The BJP may insist on home and finance, according to BJP insiders. However, some last-minute negotiations on the number of ministerial berths and portfolios were still continuing, according to sources. Union Home Minister Amit Shah is expected to finalize power-sharing arrangements in a meeting with Fadnavis, Shinde and Pawar in Delhi later today. An official announcement is anticipated soon. This marks a significant power shift as Fadnavis returns to the top post, previously holding the CM role in 2014 and briefly in 2019. With the alliance taking shape, all eyes are on how cabinet will balance the interests of all the Mahayuti partners.
In other news, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy announced on Monday that his government has declined a 100 crore rupee donation from the Adani Foundation to the Young India Skills University. This decision comes amid allegations against Gautam Adani in the United States, accusing him of bribing Indian government officials to secure lucrative solar energy contracts. In a letter addressed to Dr. Preeti Adani, Jayesh Ranjan, who is the Special Chief Secretary of the Industries and Commerce Department, stated, and I quote, "We are thankful for your commitment of 100 crore rupees to the Young India Skills University. However, following the instructions from the Honorable Chief Minister, we will not proceed with seeking the transfer of funds due to the current circumstances and arising controversies." बदलाव नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज without any skill they are not getting any employment. So I wanted to teach my students skill. उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 crores इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के, तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। That's all for today, but we leave you with visuals of TDP MP Appala Naidu Kalisetti coming to the parliament in a unique style.